Hey my dear lovely students, very good morning to all of you. In the last class we studied the introduction to profit and loss, and as I said to you that I'll teach you how to find selling price and cost price if gain percent and loss percent is given consecutively. So in the today's class we will be starting on with questions on profit and loss, and apart from the questions of finding selling price and cost price, we will also see few word problems which are very important from your examination point of view. After watching the video, if you have any doubt, kindly message me. I'll make a separate video on that particular topic for you all, and comment me your suggestions regarding the video. And if you like the contents, do remember to subscribe the channel to properly get the upcoming updates. So without wasting any more time, let's start today's video on problems on profit and loss. Problems on profit and loss. Okay, the first question which we are going to start with today is find the selling price. Find the selling price when. The first question here comes when cost price is equal to rupees 950 and gain is equal to 6%. You have to find the selling price when cost price and gain is given. As you all recall the formula for finding the selling price for gain. What was the formula? First of all, we'll write the formula. Selling price is equal to 100 plus gain percent divided by 100 into cost price. You can solve all of these questions only when you have learned the formula very well. So this is the formula for selling price. Selling price equal to 100 plus gain percent by 100 into CP. So selling price equal to 100 plus gain. What is gain? Gain is 6%. So 100 plus 6 divided by 100 into cost price. What is cost price? 950. So selling price equal to 100 plus 6 will be equal to 106 divided by 100 into CP. 950. 0 will cancel. 0. 5. 1 ja 5 and 5 9 ja 45. 5 2 ja 10. 2 will divide 106 in 53 times. So what is the selling price? Selling price is equal to 53 into 19. And what is 53 into 19? 1007. So selling price is rupees 1007. This is your answer. I hope you all have understood this very well. Let's take one more question on finding the selling price. Let's move on to the second question. Probably this is the fourth question from your textbook. Cost price is equal to rupees 8640 and loss is equal to 12 integer 1 by 2%. Okay, again a very easy question. You need not get worried after seeing the fraction part. Okay, this is a very easy question. Cost price is equal to 8640, loss is equal to 12 integer 1 by 2%. So you have to find the selling price. Selling price is equal to 100 minus loss percent divided by 100 into CP. This is the formula for loss percent. Whenever we incur loss, we subtract the loss amount from 100, and whenever we gain profit, we add the profit percent or profit amount to 100. So selling price equal to 100 minus loss percent, 100 minus loss. What is loss? 12 to the 24 plus 1, 25 by 2 divided by 100 into CP. What is CP? 8640. I hope you all can solve it.
We don't have any number below 1, so we can write 1. What is the LCM of 1 and 2? Is 2. 1 2 is 2, 100 2 is 200, minus 2 1 is 2, 25 1 is 25, divided by 100 into 8640. 8640. So selling price equal to 200 minus 25 will be 175, and this 2 will be multiplied with denominator. So 2 into 100 will be equal to 200 multiplied by 8640. So now what we can write? 25 8 ja 200 and 25 7 ja 175. 8 will divide 8640, 8 1 ja 8, 0, 8 8 ja 64, in 10809. So what is the selling price? Selling price is 7 into 1080. So what is the selling price? 70 ja 0, 7 8 ja 56, we'll write 6, carry 5, 7 10 ja 70 plus 5, 75. So this is your selling price. Or we can write, so selling price is rupees 7567. I hope it is clear to everyone. I'm so sorry bacha. 7 into 0 will be equal to 0, and 7 8 ja 56, 6 carry 5, 7 10 ja 70 plus 5, 70, 7 5 6 0, not 7 5 6 7. I'm so sorry. I hope it is clear to everyone. Let's move on to the second part of the question. That is the second question from the textbook. Second, the question is, find the gain or loss percent find the gain or loss percent when. The first question is, CP is equal to rupees 2400 and SP is equal to rupees 2592. This is the question. So in this type of question you have to find either the gain percent or the loss percent. So as we all can see that the selling price is greater than cost price, and what I taught you in the last class, that if selling price is greater than cost price, we always have profit. So what we can write? Selling price is greater than cost price. So what do we get? We get gain. And what is the formula for gain? Gain is equal to SP minus CP. What is SP? 2592. What is CP? 2400. So 2 minus 0, 2, 9 minus 0, 9, and 5 minus 4, 1, 2 minus 2 will be equal to 0. So what is gain? 192. So if we incur gain, we can find out the gain percent. What is the formula for finding gain percent? Gain percent is equal to gain by CP into 100. What is gain? 192. What is cost price? 2400 into 100. 20 will cancel, 20, and 24 will divide 192 in how many times? I think 8 times. 8 4 to 32, 2 carry 3, 8 to the 16, and 3 19. So 8 times. So what is the gain percent? Gain percent is equal to 8%. I hope it is clear to everyone. Let's move on to the fourth question of the second part. What is the fourth question? Again a very simple question. CP is equal to rupees 1800 and SP is equal to 1611 and SP is equal to rupees 1611. So what we can see here, that the cost price is greater than the selling price, and if cost price is greater than selling price, we always incur loss. So CP is greater than selling price, so what we get? Loss. What is the formula for loss? Loss is equal to CP minus SP. What is CP? 1800. And what is selling price? 1611. 0 will not cancel, 1 will take and carry with 1. 10 minus 1 will be equal to 9. 9 minus 1 will be equal to 8.
and we had given 1, so we are left with 7. 7 minus 6 will be equal to 1. So what do we get? 189. So if we incur loss, we can find out the loss percent. What is the formula for loss percent? Loss percent is equal to loss by CP into 100. What is loss? 189. What is cost price? 1800 into 100. 20 will cancel, 20. 18 will divide 189 in how many times? Definitely in point. So 18 10 ja 180. We are left with 9. We will point over there and we'll get 0. 18 5 ja 90. So what is the loss percent? Loss percent is equal to 10.5%, or simply you can write it in the fraction form. So I hope it is clear to all of you. In the first part we studied how to find selling price. In the second part we studied how to find gain percent and loss percent. Now we are moving towards the third part, that is how to find cost price. Let's see the third type. Third. Find the cost price when. We have to find the cost price when. The first question is selling price is equal to rupees 924. Gain is equal to 10%. Gain is equal to 10%. With selling price and gain percent is given, so we have to find the cost price. What is the formula for cost price when gain percent is given? Cost price is equal to 100 by 100 plus gain percent into SP. I hope you all have learned the formula. So CP is equal to 100 by 100 plus gain. What is gain? 10. So 100 plus 10 will be equal to 110 into selling price. What is selling price? 924. So 0 will cancel, 0, and 11 8 ja 88. We are left with 4, and 4 plus 4 and 4 44. 11 4 ja 44. So CP is equal to 84 10 ja 840. So CP is rupees 840. I hope you all are getting it. Nothing we have to do. If you are aware with the formula, you can solve it very clearly. Let's move on to the fourth question of the third type. The fourth question is selling price is equal to rupees 5600 and loss is equal to 6 integer 2 by 3%. You have to find the cost price. What is the formula for cost price? 100 by 100 minus loss percent into SP. So 100 by 100 minus loss. What is loss? 6 3s are 18, 18 and 2 20 by 3 into SP. What is SP? 5600. So again, as we have solved it before, we will solve it again the same. 100 by, what is the LCM of 1 and 3? It is 3. 1 3 is 3, 100 3 is 300, minus 3 1 is 3, 21 is 20 into 5600. So 100, 300 minus 20 will be equal to 280 by 3 into 5600. So what we can do over here, we can put this 3 in the numerator part. And how is this possible? Let me teach you one thing. Suppose we have 100 by 280 by 3. So what we have studied in the fraction, that we can multiply the number
we can multiply the fraction with any number in both the numerator and denominator part. So we can multiply 3 over here and also 3 over here. So this 3 will cancel this 3 and the 3 goes into the numerator. So what I can write? I can write this 3 over here. So 100 into 3 divided by 280 multiplied by 5600. So what do we get? 100 3 ja 300 divided by 280 into 5600. 1 0 will cancel, 1 0. 7 4 ja 28, 7 8 ja 56 and 0. 4 will divide 80 in 200 times, and what do we get? 200 into 30. 3 2 ja 6, 6000. So what is our cost price? Our cost price is 6000. So what we can write? Hence, so cost price is equal to rupees 6000. I hope it is clear to all of you. You have studied well how to find selling price, how to find cost price, and how to find gain percent and loss percent. Okay. Now let's move on with the word problem, a very important word problem. Question number 6 from your textbook. What is the question? A vendor buys lemons at rupees 25 per dozen and sells them at the rate of 5 for rupees 12. Find his gain or loss percent. Very easy question. सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा देते हैं अच्छे से, so that you can understand the question very well. The question is, a vendor buys lemons at rupees 25 per dozen. कोई भी वेंडर है जो कि लेमन खरीदता है, कितना में खरीदता है? At rupees 25 per dozen, एक दर्जन यानी कि 12 लेमन खरीदता है, कितने में? 25 रुपीज में. एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 for rupees 12. और कितना बेचता है? 5 ठो बेच देता है, कितना में? 12 रुपीज में. तो आप ये बताइए कि इसको गेन हुआ कि लॉस हुआ. तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, या तो आपको लेमन का क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा. यहाँ पर 12 लेमन का प्राइस दिया हुआ है, या तो आप एक लेमन का निकाल लीजिए, और यहाँ पर भी 5 लेमन के लिए इतना में सेल करता, तो यहाँ से भी एक लेमन का प्राइस निकाल लेंगे. यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है पीछे. जो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे और समझेंगे नहीं, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है. आपको सब चीज पढ़ाया जा चुका है. आप जब तक ध्यान से देखिएगा नहीं, डेफिनेटली विल हैव प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो हियर एंड इट इज सोल्ड फॉर 5 for rupees 12. 5 लेमन को बेचता है कितने में? 12 में. तो आपको यहाँ से भी एक लेमन का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर एक लेमन का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा. फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको 5 ही छोड़ सकते हैं, और यहाँ से आप 5 लेमन का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए. अब वो कैसे निकालेंगे? तो एक का निकाल कर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा. ठीक है. तो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन. ओके. और वेंडर बाइज बताए थे इंट्रोडक्शन में, बाई का मतलब कॉस्ट प्राइस. ओके. सो व्हाट आई कैन राइट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन. पर डजन का मतलब कितना? 12. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन इज इक्वल टू रुपीज 25. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना होगा? अगर 12 लेमन का 25 है तो एक लेमन का कितना होगा? बिल्कुल कम. कम का मतलब क्या होता है? डिवाइड. रुपीज 25 बाई 12. वेरी गुड. और क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन. 5 लेमन को कितना में बेचा जाता है? रुपीज 12. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन, तो एक लेमन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? कम होगा. रुपीज 12 डिवाइडेड बाई 5.
यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। 12 लेमन का दाम 25 रुपीज था, तो एक लेमन का प्राइस कितना होगा, कम होगा। कम के लिए यूनिटरी मेथड में क्या करते थे, डिवाइड 25 बाई 12। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन कितना है, 12, तो एक लेमन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 12 बाई 5। अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस तो एक एक लेमन का निकल गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 बाई 12 लिख देते हैं, 25 बाई 12, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, छोटा सा लिख दिए, ठीक है। डैश का साइन दे देते हैं और सेलिंग प्राइस कितना है 12 बाई 5, यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। अब हमको निकालना है गेन या लॉस परसेंट। तो गेन या लॉस परसेंट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेन। और गेन या लॉस को पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस। तो उन दोनों में से बड़ा कौन है, ये कैसे पता कर सकते हैं, बाई कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। अगर आपको याद नहीं है तो वो दैट इज बिकॉज यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो ऑफ फ्रैक्शन, आपने वो नहीं देखा है, वो अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर कैसे करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 25 5 जा 125 एंड 12 जा 144। तो कौन सा बड़ा है, 125 की 144, डेफिनेटली 144 बड़ा है। और अगर 144 बड़ा है तो क्या बड़ा है, सेलिंग प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो क्या होता है, गेन। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, सेलिंग प्राइस बड़ा यानी क्या हो गया आपको, गेन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गेन, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना 12 बाई 5 माइनस सीपी कितना 25 बाई 12। ओके, 5 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 5 के टेबल में 60 कितनी बार में 12, 12 जा 144 जो ऊपर आया था, एंड 12 5 जा 60, 25 5 जा 125। 4 में से 5 जगह एक कैरी, 14 में से 5 गया कितना हो गया 9, एंड 13 में से 12 गया 1, दैट इज 19 बाई 60। तो गेन निकल गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाई सीपी इंटू 100। व्हाट इज द गेन, गेन इज 19 बाई 60। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 25 बाई 12, 25 बाई 12 multiplied by 100. So we can solve it by cross multiplying 19 by 60 multiplied by 12 by 25 into 100. 25 4 ja 100, 12 5 ja 60, and what do we get, 19 4 ja 76 divided by 5, and 5 will divide 76 in 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 26, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 1, पॉइंट देंगे क्या आएगा 0, 5 2 जा 10, 15.2%. दिस इज योर आंसर. सो व्हाट इज द गेन, द गेन इज 15.2%. आई होप it is clear to everyone. So that was all for the today's video. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स. दिस इज डेफिनेटली अ लेंदी चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर है. वी विल स्टडी इट वेरी सिंसियरली एंड वेरी स्लोली ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखें. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, हाईएस्टली 2 मिनट या 3 मिनट. आई हैव ऑल द रिकॉर्ड कि कौन बच्चे कितना देर वीडियो को देखते हैं. अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करिएगा बच्चों तो डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. आपसे कोई भी पूछ लेगा, आप कुछ बताने के लायक नहीं है. आप बस क्लास को किसी तरीके से पास करते जा रहे हैं, क्लास का नॉलेज नहीं ले रहे हैं. Knowledge and marks are two different things, and I think marks is not important. Knowledge is more important. So, hope to see you in the next video. Till then, thank you all. Have a good day.